And now the next one we want to talk about is kind of a singly circular linked list. So what basically the singly circular linked list is? Singly circular linked list is basically the singly linked list. What is singly linked list? Each node contains pointer, single pointer. Each node contains single pointer to the next node. So it is basically the singly linked list. But then, sir, why it is called a circular? Oh, it is called a circular because the last node, because the last node now not containing null, but the last node all the way containing the address of the first node. Oh, the last node containing the address of the first node, you say that now it is a singly circular linked list. Okay, that makes sense. So I understood what is singly circular linked list. तो सर अब क्या करना है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का? आई एम गोइंग अहेड. अब हमें क्या करना है? वी वांट टू डू द ऑपरेशन इन सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट एज वेल. तो सर प्रोग्रामिंग में कोई फर्क पड़ेगा? प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ओनली थिंग इज दैट अर्लियर लिंक लिस्ट यू यूज टू स्टॉप ऑन नल. अर्लियर लिंक लिस्ट यू यूज टू स्टॉप ऑन नल कि नल आ गया अभी रुक जाओ. अब अच्छी बात ये है इस लिंक लिस्ट में नल ही नहीं है. और अगर इस लिंक लिस्ट में नल ही नहीं है, नाउ यू नीड टू ट्रैवर्स ऑल द वे. सो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू स्टॉप और व्हाट ऑल ट्रिक्स दैट यू नीड टू प्ले टू वर्क ऑन दिस, राइट? सो लेट जस्ट गो अहेड. सो नहीं, right now I'm not worrying about Kishore is saying that tail is equal to head. Not tail is equal to head. The last node's next is equal to head. It is not tail is equal to head. You can say that it is like tail's next is pointing to the head. I hope that is okay. चलो, I'm just going ahead. I'm just going ahead. हमें क्या बता रहा था आपको? हम्म. तो सबसे पहला क्वेश्चन, how do I display this linked list? How do I display this linked list? And you will find that the most difficult part in this whole linked list is actually the display. So why display is difficult, you will automatically understand. Let's see. You recall your earlier code. Earlier code you have written in a very simple kind of manner, simply saying that trav is equal to head, while trav is not equal to null. You simply say that print trav dot data, your printed data, and then you simply say trav is equal to trav's next. Is it so? Yes, absolutely no issues. Now the question is that यहाँ पर यहाँ पर null तो होता ही नहीं है. अगर आपने यही कोड वापस से लिखा, then this will go in an infinite loop, isn't it? Yes, it will go in an infinite loop. So what I need to do? Abdullah sir, it is very easy. All we can do is that we can replace null by head. And please understand that every time just doing replacement doesn't solve your problem. So why it doesn't solve your problem? You try to do the paperwork. Try to do the paperwork, you will realize that. So you take a pointer trav. The trav is a pointer that is pointing to the head. Yes, it is pointing to the head. So my first line of code is done. In the first line, I simply say that trav is equal to head. And now what I'm saying, I'm simply saying that trav dot next is not equal to head. Trav dot next is not equal to head. A condition failed over there itself. And since condition failed over there itself, you just directly came out of the loop. Not even a single node it is able to display. So I was just trying to tell you that now this is a typical problem that you face it with this linked list. तो ऐसे मत समझना सर पहले जहां जहां पर नल था अब हम लोग नल निकालेंगे और हेड डाल देंगे and all our problems will be automatically resolved. No, it won't. It won't. Now you need to use some logic. You need to use some logic, some specialized logic. And then what specialized logic that I can use is a very common technique that people follow is, let us go for a do while loop. Instead of this, you go for kind of a do while loop. So if you follow a kind of a do while loop, so will it work? Again, do the paperwork and then come up with the result. Will it work or will it not work? वापस से एक बार से कंडीशन क्या लगाना चाहिए?
ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड लगानी चाहिए, ट्रैव इज नॉट इक्वल टू हेड लगानी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, कल भी मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम वेस्ट किया है, आज मैं वापस से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्लीज डू नॉट बाय हेड द कंडीशंस। I request you once again, please do not behead the conditions. Better do the paperwork and come up with the result. तो आप बोले सर आप बाहर नहीं करते हो क्या? मैं कभी बाहर नहीं करता हूँ। अगर आपने मेरे को कभी ऐसे बीच में से आके अचानक से पूछा, सर उसकी कंडीशन क्या थी? मैं कहूँगा भाई मेरे को याद नहीं है। यू गिव मी 2 मिनट्स, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और फिर तुझको बताता हूँ कि कंडीशन क्या होना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल वन। सो लोग कंडीशन प्रॉब्लम कैसे हो जाता है कि आप लोग ऑलरेडी कुछ तो गेस कर लेते हो। गेस करते हो मतलब गेस भी नहीं, एक्चुअली मटका मारते हो। तो आप लोग कुछ तो मटका मारते हो और फिर बाद में मुझको आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि भाई आप जो मटका मारा है आपने, आपका मटका सही नहीं लगा है। फिर लोगों को बहुत दुख होता है। करेक्ट नो? सो फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं। और नए साल के स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, इजंट इट? सो पीपल से दैट सर आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस। मटका मारोगे तो कॉन्फिडेंस लूज करने के चांसेस वैसे भी बहुत रहेंगे। सो मटका मत मारो, डायग्राम ड्रॉ करो एंड देन कम अप विद द सॉल्यूशन। दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो शुरू करते हैं। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। ट्रैव इज इक्वल टू हेड। ट्रैव इज इक्वल टू हेड। यस, ट्रैव इज इक्वल टू हेड। printf trav dot data. printf trav dot data, what it will print is trav का data है 11, 11 is printed. Okay, that is good, 11 is printed. Then what is next line? Next line is saying that trav is equal to trav's next. trav is equal to trav's next, अभी आपको अच्छे से पता है, कल हमने इसके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया है। trav's next is 200, I go to the 200. I go to the trav 200, I check the condition. Oh, trav is not equal to head. अभी तो मैंने ये condition लिखा है, there are quite good chances that this condition may be wrong. Let it be. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। So I have written some condition and obviously I want to repeat the loop once again. I want to repeat the loop once again. So let us print it once again. For trav.data. Now trav.data, I printed 22. I printed 22. Again I'm saying that trav is equal to trav's next. Trav is equal to trav's next. ये इटरेशन रन करना है क्या? ये मैंने 2 इटरेशन ऑलरेडी किए इस लूप के। थर्ड इटरेशन शुड गो। यस, अभी तक हमारा सारा डेटा प्रिंट नहीं हुआ है। अभी भी 33 पेंडिंग है। अभी भी 33 पेंडिंग है। प्लीज गो अहेड एंड देन यू रन इट वंस अगेन। Again you say printf traveler data. What you printed was 33. Okay, that is good. And now you say trav is equal to trav's next. And what is trav's next? A trav's next is 100. So again you are pointing at the 100. Now should you want to continue? Should you want to continue? No, not really. I want to stop. So when I want to stop? So when exactly I want to stop? I want to stop when trav becomes head, right? And that is the reason the condition was written while trav is not equal to head. While trav is not equal to head, that is something in front of you. Let us just go ahead. Let us just go ahead, do the necessary modifications into the code, and then come back and think of the special cases as well, if any. New Java project and singly circular list. Okay, we got a singly circular list. It is there. Oh, looks good. And to create a package, new package, Sunbeam. It is done. I'll write a new class over there. New singly circular main. Singly circular main. Singly circular list main class is written. That is also good. I do not want to waste my time in writing that switch case and everything once again. So what I'll do is that I will copy paste the existing, at least main function तो मैं copy paste करता हूँ, ऊपर का कोड मैं वापस से लिखूंगा, don't worry. But taking input and all that, it is very boring stuff. Done. So this is ready. And then I need to go ahead, I need to create class singly circular list. Okay, class singly circular list. The object of class singly circular list is to be created. Object of class singly circular list is to be created. Oh, that is in front of you. And then you go ahead, you start implementing all these functions one after another. अभी तक तो मैंने कुछ भी implement नहीं किए, so they are all, I'll comment it and then I'll start implementing all of them one by one after another. Give me a minute, let me just comment all of them.
आप लोगों ने कोड शेयरिंग ओपन करके रखा होगा, नहीं किया होगा प्लीज डू दैट, क्योंकि एक पार्ट हम लोग आगे आगे करते जाएंगे. You continue further. So very first thing what you need is that node class to be created. That is good. After that, then we need the list class fields to be written. Okay, that is good. And then list class methods to be written. Chalo, node class, as we have done yesterday, static class node, static class node. And then again you need to write it node class fields. Okay, and then inside that node class methods. Fields is pretty simple. Private integer data. प्राइवेट. अब लो सर सिर्फ इंटीजर की लिंक लिस्ट बनती है क्या? मैंने कल ही बताया आपको जिस टाइप की चाहिए उस टाइप की लिंक लिस्ट बनाओ. वैसे अगर आप लोगों ने आपका असाइनमेंट ठीक से नोट किया है, एक असाइनमेंट में एक जगह पे आपको ऑब्जेक्ट का लिंक लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है, which is kind of a generic linked list actually, correct? So and to be frank it is very easy to make a object linked list, क्योंकि अगर हम लोग कभी C++ में वगैरह बनाते हैं तो void pointer की linked list बनाना is very complicated job, but making a linked list of an object is very simple job. Hardly few places int is to be replaced by object and it works. तो I leave it for you, आप लोग कर सकते हो अगर करने की कोशिश की तो I am leaving it for you. चलो let us go ahead. Constructor I want to write it so that I can do the initialization. Oh, data is equal to 0. All right. Next is equal to null. One is done. You continue further. I want to write the parameters constructor as well. Oh, yes, we have like a parameters constructor. Yes, you find that this is a parameters constructor, and inside parameters constructor, I have done the necessary initialization. I'm taking let's say val, and ये मेरे को नहीं चाहिए. Anyway, so things are going well. This is same node class what we have written earlier. Now come back to the data members. Coming to the data members, what I need: private node address of the first node. It is just head. This is done. Nothing extra I want to do it. And can you quickly tell me what should I do in a constructor? What should I do in a constructor? Constructor, you say that you want to make the head node is equal to null. Again, तो सर circular linked list में tail pointer नहीं लेते. Choice is yours. If you want to take a tail pointer, you can take it. It is up to you. I do not really bother about it. वो आपकी मर्जी है लेना है नहीं लेना है, और अगर लेना है तो you need to consider that extra job. जिसको इंटरेस्ट होगा वो लोग करके देख सकते हैं. मुझको नहीं लेना है. I want to keep it simple. Okay, I'm going one more step ahead. Going one more step ahead. क्या करना है मुझको? Yes, I need to write a function, a display function. And what I said, display function के लिए हमें थोड़ा सा tricky काम करना पड़ेगा. We need to start with the head. We want to print each node. We need to print each node data. So travel.data, and then I need to go to the next node. But ये मुझको repeatedly करना है और यहाँ पर null नहीं आता है. तो we said that do while loop is most suitable over here, while trav is not equal to head, and this should give me the result. Okay, earlier I'll just put a message system.out.println. I can say that let's say list to be printed. Okay, that's it. और कुछ करने पड़ेगा? Not really. Just think of a special case. What could be the special case? Think of a special case whether you need any changes to be done or not. So I'm talking about the special case where my linked list is empty linked list. If my linked list is empty linked list, then what I can do? What I need to do? Will this code work? If linked list is empty linked list, will this code work? Will this code work? No, it will not work. Why it will not work? Because आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग trav को यहाँ पर null कर रहे हो, trav को null कर रहे हो, and simply saying printf trav.data. Printf trav.data will give you null pointer exception. Okay, तो सर इसका मतलब है अगर null होगा तो मुझको immediately return होना है. Absolutely, null होगा तो आपको immediately return होना है. So I'm talking about a special case. I'm documenting it over here. If if list is empty, what is that? Return. Do not do anything special.
I don't want to even throw the exception. If you want, yes, you can throw the exception as well. अब मैंने लास्ट वाला जो डिस्प्ले फंक्शन लिखा था उसमें मैंने एक्सेप्शन नहीं थ्रो किया था. जस्ट टू बी कंसिस्टेंट मैं यहाँ पर भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट रिटर्निंग साइलेंटली, राइट? तो आई एम जस्ट गोइंग बैक and checking it over here. Special case, if head is equal to null, simply say return, nothing much to be done. Nothing much to be done. That's it. So special case, let me write it over here. The special case, list is empty, then nothing to do, then simply return. General case, what is general case? Go ahead and print all nodes in list. Print all nodes in list, static from the head node till the last node. Will it work? Yes, absolutely. One more small, I can say that variation or probably readability I can talk about. One more small readability I can talk about. ये लास्ट इसमें भी किया जा सकता था, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ नया देखते हैं. वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ राइटिंग अ सेपरेट फंक्शन. We can always think of writing a separate function to check whether my list is empty or not. Whether my list is empty or not. And what all code I need to write it into that? I need to simply write a code over here. Head is equal to null. So if head is equal to null, condition is true, it will return true. If head is equal to null is false. If it is false, means list is not empty, it will return false. So sir, if I write such a function, what is the advantage? The advantage is that instead of directly writing a code over here, you can always write a code is empty. See how good it looks. Now you find that this code is more readable than the earlier head is equal to null. Again sir, ये लिखना चाहिए क्या? It is up to you. मैं ये नहीं कहूँगा कि लिखना compulsory है, but this is making it more readable. If is empty, then return. Otherwise, continue on to this. Is this clear? Okay, good. तो should we write this? हम लोग इसको रखें या निकाल दें? If you are getting confused, I can remove it. This is not a problem. Should I keep it? It's okay. Okay, that is good. So this is just to make it more readable and like a good practice. आप लोगों ने देखा भी होगा वैसे जो आपका जावा का कलेक्शन है, जावा के कलेक्शन में एक अलग से empty का मेथड है which is returning a boolean value to see whether the collection is empty or not empty. So ऐसे कुछ छोटे छोटे हेल्पर मेथड्स हम लोग लिख सकते हैं. कोई बहुत बड़ा कोड है इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, but that makes your code bit more readable. Anyway, अब मैं आगे जा रहा हूँ. अब मैं आगे जा रहा हूँ. That is good. And now I'm thinking of the next function. What is the next function that I need to think of? Okay, public void add last function, and I want to add a value at the end of the list. So chalo, let us draw the diagram and let us see how we can do that. If we will follow the similar mechanism all the time, you already know that. So I'm just going ahead and with the hope that you people have done now enough of practice. I need not to draw a very that numbers and everywhere all the time. So head is equal to 10. This is pointed to 20. This pointed to let's say 30. This pointed to let's say 40. And this 40 it is pointing at the beginning. So to the head. And this way my linked list is there. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? If we are trying a function, add last function. So be clear with that. So what all steps I need to do it? What all steps I need to do it? Obviously my very first step, बोलो फटाफट से. पहला स्टेप तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा. To want to add a node at the end of the list, what is the very first step? Yes, very first step is that पहले node तो बना लो, उसके बाद में आगे वाला सोचना. Absolutely good. So it is new node and I'm saying 50, and you know that by default हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्टर में इसका नेक्स्ट नल किया है, भूलना मत. इसके कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने इसका नेक्स्ट नल किया हुआ है, इसको भूलना मत. सो इट इज केप्ट एज नल. नाउ लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी विच ऑल स्टेप्स दैट आई नीड टू फॉलो. अगर आपको ये डिलीट, अगर आपको ये नोड एट द एंड ऐड करना है तो डायग्रामेटिकली क्या क्या चेंजेस होने एक्सपेक्टेड है. पहले चेंजेस वापस से, मेथोडोलॉजी स्टिल रिमेन सेम. पहली चीज तो आपको शायद लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए. आई एम वेरी श्योर यू वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवर्स टिल द लास्ट नोड. ओके, दैट इज गुड. उसके बाद में what is second thing that you look for?
ये जो नया वाला नोड है, नए वाले नोड के नेक्स्ट में, ए नए वाले नोड के नेक्स्ट में यू आर लुकिंग फॉर हेड. ओके, दैट इज ऑल्सो गुड. एंड व्हाट इज थर्ड थिंग? नया वाला नोड अभी लास्ट नोड होगा ना, ये नया वाला नोड ऑलरेडी लास्ट नोड होगा, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में हेड आना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर डन. और एक कुछ बचा हुआ है, टेक अ लुक एट द डायग्राम. जो आपका लास्ट नोड है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में यू शुड बी हैविंग अ न्यू नोड. Oh, so logic goes something like this. A logic goes something like this. First, create new node and initialize it. That is good. Second step would be traverse till last node, a traverse till last node, correct? So that using a trav pointer, you can reach to the last node. Once you reach to the last node, what next thing that you need to do? I always prefer a rule, make before break. मेक बिफोर ब्रेक मतलब जो नए नोड्स है उसकी लिंक हम लोग पहले सेट करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग लिंक है उसको हम लोग बाद में ब्रेक करेंगे. सो आई गेस दैट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. सो विद दैट गुड आइडिया, continue further. all i need to do is that all I need to do is that the new nodes, what is that, make new nodes next is equal to head. because ये जो आपका लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड शुड ऑलवेज पॉइंट एट द बिगिनिंग. एंड द लास्ट स्टेप वुड बी, जो अभी आपको लास्ट नोड मिला है ट्रैव, जो अभी आपको लास्ट नोड मिला है ट्रैव, उसके नेक्स्ट में आपका न्यू नोड जाना चाहिए. उसके नेक्स्ट में आपका न्यू नोड जाना चाहिए. दिस इज एब्सोल्युटली ओके. सो दीज आर 1 2 3 4 steps to be followed. And if these 4 steps are to be followed, why not you go ahead, write a code, and then we will again come back to the diagram and we will again do it on a diagram. Correct? तो पहले जाके कोड लिखते हैं. What are steps? Just now we say that create new node and initialize it. Oh yes, this is my first step. What is second step? Traverse till last node. Last node. Don't forget that. Don't forget that last node is one. In this case, कौन से नोड को हम लोग लास्ट नोड कहते हैं? इन अ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, कौन से नोड को हम लोग लास्ट नोड कहते हैं? इन अ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट वो होता है, लास्ट नोड वो होता है जिसके नेक्स्ट में हेड होता है, जिसके नेक्स्ट में हेड होता है. सो यहाँ पर हम लोग नल को चेक नहीं कर सकते. डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, इसको याद रखना. सो ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड दैट इज द नोड whose next contains contains head in the sense address of first node. Then what you need to do is that new nodes next should point to the head, that is the first node. And then the last nodes मतलब a last node मतलब कौन आपका travs next to the new node. That is what all we need to do it. Let us just go ahead and do it one by one. So how do you create a new node? That is very simple job. Now we are expert of that. So new node and we pass the val there. First job is done. Second, traverse till last node and traverse till last node. How do I traverse till last node? So trav is equal to head. That is good. While trav dot next is not equal to head, not equal to head, trav is equal to trav dot next. That is absolutely fine. Next, the new nodes dot next is equal to head. क्योंकि अभी जो न्यू नोड है वो सबसे एंड में जाने वाला है, और अगर वो सबसे एंड में जाने वाला है तो उसके नेक्स्ट में वापस से हेड आने वाला है. दैट इज गुड. लास्ट, द लास्ट नोड्स नेक्स्ट टू न्यू नोड, the last nodes next to new node. So simply you say that जो अपने ट्रैवर्स करते करते क्लास में गए थे, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट इसको बाय हार्ट मत करो. अब वापस से ये मत कहना सर आपने डिस्प्ले करते वक्त डू वाइल लूप लगाया था, सर यहाँ पर वाइल लूप क्यों लगाया? आई सेड दैट यहाँ पर डू वाइल वाज नेसेसरी. अगर डू वाइल यूज नहीं करते तो क्या होता है, शायद मैंने आपको करके दिखाया था, शायद मैंने आपको करके दिखाया था. यहाँ पर इज डू वाइल इज रियली नेसेसरी? आई डोंट थिंक सो. डू द पेपर वर्क एंड देन कम अप विद द सॉल्यूशन. मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप ऐसे मत करो सर, एक बार यहाँ पर डू वाइल लूप लगा दिया तो रट्टा मत मारो.
कि सर संगली सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है तो हमेशा डू व्हाइल लगाना होता है, ऐसे रट्टा मत मारो। ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना है ना सबसे मुश्किल काम होता है। सो पीपल ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्मूलाज कि वो क्या याद कर सकते हैं, और देन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बाहर मत करो, यू जस्ट गो अहेड, यू डू द पेपर वर्क, एंड देन अगेन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डोंट यूज डू वाइल, आई एम सेइंग दैट यू डू द पेपर वर्क। इफ योर पेपर वर्क सेज दैट नहीं नहीं वाइल से काम नहीं हो रहा है, देन गो फॉर डू वाइल, एब्सोल्युटली फाइन, नो वन इज स्टॉपिंग यू। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, शायद मुझको शायद लेक्चर के पहले भी बतानी चाहिए थी, ऑन अ वेरी फर्स्ट डे। ये मेरा अपना ओपिनियन है, और ये आज का ओपिनियन नहीं है, प्रोबब्ली सिंस ईयर 2002, 2001, 2002 जब मैंने पहली बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब से लेके आज तक, सो पिछले 18 सालों में मेरा ये ओपिनियन कभी चेंज नहीं हुआ है। आई स्टार्टेड टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर बाय समवेयर ईयर 2005 नियर बाय। सो 2005 में मैंने पहली बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, अभी 2020 है। सो 10-15 साल गुजर गए, 15 सालों में मेरा ये ओपिनियन कभी नहीं बदला। तो ओपिनियन इज वेरी सिंपल। मेरे को ये हमेशा लगता है दैट जो लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, जो लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, वो सारे उल्लू के पट्टे होते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं आप पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाने वाले की बात कर रहा हूं। आई ऑलवेज बिलीव दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी टॉट। डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी टॉट। सो एनीवन हु इज ट्राइंग टू टीच इट, आई गेस दैट ये बंदा खुद पागल है। तो सर आप पढ़ा रहे हो, हाँ मेरे को पता है पढ़ा रहा हूँ, क्या है क्या कहते हैं, कस्टमर डिमांड, सो यू हैव टू सप्लाई, बाकी कुछ नहीं है, बट इट डजंट मेक इट करेक्ट। तो सर व्हाट देन, व्हाई, व्हाट एग्जैक्टली यू आर टीचिंग? आई ऑलवेज बिलीव दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ सब्जेक्ट टू टीच। आई ऑलवेज बिलीव दैट डेटा स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट टू लर्न। I repeat, it is not a subject to teach, it is subject to learn. And how to learn? How to learn? You draw the diagram, you come up with your own code, let it be wrong code, right code. You type your own code in any language, you test it. If it is working correct, then you are correct. If it is not working correct, go back to the paper, again do the paperwork, find out the mistake, rectify the mistake, again come up with the modified solution, try that. If it is working, then you are correct. If it is not, again go back to the paper. I'm saying that that is the best way of learning data structure. Data structure cannot be taught, data structure can be learned. तो सर आप क्या पढ़ा रहे हो? टू बी फ्रैंक, आप क्या पढ़ रहे हो मुझको पता नहीं, लेकिन मैं ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे पढ़ाया जाता है, पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सो हाउ टू लर्न, आई एम नॉट रियली टीचिंग यू द डेटा स्ट्रक्चर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू मेथड ऑफ लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर. So people who follow this method, I'm very sure they will be able to learn the data structure. So anyone saying that हमको data structure नीलेश सर ने पढ़ाया, sorry not at all, मैं data structure पढ़ाता ही नहीं हूँ. I always keep telling people कि this is a method, you take this method, you follow this particular method, you follow the method, you will be comfortable in data structure. You said that नहीं सर हम लोग सिर्फ सुनेंगे and then we will know data structure. ऐसा कभी नहीं होता है. Data structure is not a theory, is not a knowledge कि हमने पढ़ा और हमें knowledge याद हो गया. Data structure is something to be tried by yourself. And unless and until you tried by yourself, you can never say कि अब मेरे को data structure आता है and I'm very confident. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप लोग प्लीज यहाँ के फॉर्मूले वहां पर मत अप्लाई करो. यू कम अप विथ योर लॉजिक, लेट द लॉजिक बी रॉन्ग, लेट द लॉजिक बी रॉन्ग, ट्राई योर लॉजिक ऑन पेपर, इज इट गोइंग करेक्ट? एंड इफ यू फील बिलीव दैट नहीं से पेपर के ऊपर सही जा रहा है, गो अहेड एंड कोड इट. मैं फिर से बता रहा हूं, तो सर दिस मेथड विल टेक टाइम, आई नो दैट दिस मेथड विल टेक टाइम, बट इट इज रिक्वायर्ड वंस इन अ लाइफ. अगर आपको आईटी में करियर करना है, जिंदगी में एक आध बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना चाहिए और ठीक से ढंग से पढ़ना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग. चलो आई एम जस्ट गोइंग बैक, आई एम जस्ट गोइंग बैक एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. Again, don't take it personally when someone is suggesting me, I'm trying to tell them, but it is not only for that like one person who has suggested me, it is for probably everyone. It is for everyone. So you align your thought process, please understand that. चलो ट्राई करके देखते हैं. सर आपने ये जो कोड लिखा है, is it working well? Oh, what is the code that you have written? So new node is equal to this, new node is equal to new node. Okay, let's find a new node. So you are going to create a new node over here. चलो न्यू नोड क्रिएट कर लिया, ए न्यू नोड इनिशियलाइज कर लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट इज सेकंड स्टेप?
You take a trav and you try to go to the last node. So you take a trav pointer. This is a trav pointer. Trav is equal to head. A check is head का a इसका trav का next a, is it ahead? Take a look at the diagram. इसका जो next है, is it ahead or not really? Go ahead. Trav is equal to trav's next. इसका जो next है, is it ahead or not? Again, trav is equal to trav's next. इसका जो next है, is it ahead or not? Again you continue. Trav is equal to trav's next. इसका जो next है, is it ahead? Yes. इसका next, yes, it is pointing to the head. And since it is pointing to the head, I can say that okay, this is the last node. So trav's next, तो जो कोड अभी हमने लिखा, trav is equal to head, trav's next is not equal to head, and trav is equal to trav's next. This is absolutely correct code to go to the last node. So I reach to the last node. What is my next step? New nodes next is equal to head. Oh, new nodes next, ये आपका हेड का है, हेड 10 के ऊपर है. So new node का next आप लोग कह रहे हो, in new nodes next you are saying it should point to the head. It should point to the head. So all the way it is pointing to the head. Is it correct? Yes. Last node के next को head पे point करना चाहिए. I understand. I have made a new link. And what is last thing? Last thing I want to say that trav's next is equal to new node. A trav, मेरा trav already यहाँ पर आ चुका है. मेरा trav already यहाँ पर आ चुका है. My trav is already till the last node. Till the last node. अब मुझको क्या करना है? इसके next के अंदर नए node का एड्रेस डालना है. तब जाके मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. ट्रैव के नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड का एड्रेस डालना है, तब जाके मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. दैट्स इट. दिस इज व्हाट एट लास्ट इज. Now you ask the question, so will it work for every different scenario? Or will it work for every different scenario? Let me check it. So you have got, let's say trav, sorry, let's say you have got like a head, and if it is a head, sorry, ये आपका नहीं है, ये स्प्रिंग बूट का है. मैं कहाँ पर था? So let's this is head, and if your linked list is empty, now tell me, do you believe that this code will work? कोड आपके सामने है, head is equal to null. Will this code work? Not at all. You'll find that if head is equal to null, at this line it is going to throw me the exception. At this line it is going to throw me the exception. So again, it is a special case. If list is empty, draw the diagram and ask question to yourself. If list is empty and you are creating a new node, at some address, my question is that what you should be doing? ये बोलो फटाफट. As per this diagram, इसके साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए पहले वो बताओ, कोड तो बाद में लिख लेंगे. If my list is empty and you are trying to add a new node, इसके साथ क्या होना चाहिए? What we should do over here? I'm talking about a special case. List empty. Then the node should be first node. The node should be first node. तो it is very easy. तो सर एक काम करेंगे, head is equal to 100. Just take a look at the diagram and tell me, is it sufficient? Take a look at the diagram. Whatever you are saying is not wrong. Absolutely. Head is equal to new node. Is it good? Yes, it is good. But it is sufficient? Not really. ये लिंक लिस्ट बन गया, लेकिन अभी भी ये सर्कुलर नहीं बना है. सर्कुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर बनाने के लिए आई नीड वन मोर एक्स्ट्रा लाइन विच विल इंश्योर दैट इस नोड का लास्ट नेक्स्ट वापस इसको पॉइंट करेगा. So you can always write another line of code saying that new node's next is equal to head. To be frank, you can also write head dot next is equal to head. Yeah, ultimately head and new node both are pointing to the same. Please understand that. ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है. So you write new nodes next is equal to head, or you write head dot next is equal to head, or you write new node next dot new node is equal to new node. All are one and the same. उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. This should still go well. तो चलो, if I understand this, let me just go ahead and consider the special case. So special case 1, if list is empty, new node is the first node,
and make it circular. Don't forget to make it circular, क्योंकि by default वो circular नहीं होने वाला है, ये आपको पता है. If head is equal to null, or if is empty, I guess this is better. If it is empty, what is to be done? Head is equal to new node. That is not issue, but don't forget to make it circular. So new node dot next is equal to head. All right. Else, which is a general case, add node at the end. That is pretty simple job. You go ahead, you add it at the end, and that's it. Nothing else to be done. Over. So will it work? Oh, करके देखो अभी. I believe हो तो चुका है. But still, we can go ahead. We can check if it is working. Let's go ahead. Oh, संग ये पिछला कोड रन हुआ है अपना. Not this one. Let me run the current one. Run as Java application. Okay, that is good. And add last 3. Let me add 10. 3. Let me add 20. 3. Let me add 30. 3. Let me add 40. 10, 20, 30, 40. Add last. And then you say display. And yes, it is printing it well. 10, 20, 30, 40. Nothing else is to be done. Is this comfortable? I hope you can copy paste and run it. I'll wait for a minute for you. Code is available on code sharing. Please take it from there and continue. I'm waiting for you, and at the same time you have any questions, please do ask. वैसे कल मैंने बताया था कि मैं 2 घंटे में बचे हुए 3 लिंक लिस्ट खत्म करूंगा. आई एम नॉट रियली गोइंग विद दैट स्पीड, and anyone who is finding that it is going fast, slow, whatever, please let me know in time. Finding it going fast, let me know. If you find it going slow, let me know. We can definitely change in time. Chalo, good. So right now we are able to write 2 functions, and not only 2 functions, we are able to even run that add last function and then display function. So we are able to add the node at the end. We are able to display that particular nodes. Things are going well. एक जगह पे हमने do while use किया है because वहां पर वो ज्यादा suitable था. यहाँ पर हमने normal use किया है. That is also good. अगर आपको add last समझ में आ गया, trust me, add first is very interesting. Add first is really very interesting. So is it very interesting? What is the meaning of it? I'll just go ahead and I'll try to do it once again. I'm just going back, and please pay attention. Atlas का कोड आपके सामने रखना. Atlas का कोड आपके सामने रखना. और मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ add first के बारे में. And let's see, add first, Atlas का कोड सामने रखना. उसका क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ. So you start with the linked list. This is my first 10. It pointed 20. Pointed to 13. This pointed to 14. And this is again pointing back to the 10. Oh, is this one linked list is a circular linked list? Yes, absolutely. This linked list is a kind of a circular linked list. अब मुझको एक नोड at the start ऐड करना है. ओके, ये वाला जो नया नोड है 50, I want to add at the beginning, जिसका next अभी null है. What all steps that I need to follow? Obviously, my very first step, you people understand it. What is that? Create new node and initialize it. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. That already we understand. Now डायग्राम जरा चेक करो और मुझको बताओ एग्जैक्टली मुझको क्या करना है यहाँ पर.
डायग्राम में पहले बताओ कि डायग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, डायग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, स्टेप के ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। यस डेफिनेटली, एज समवन इज सेइंग दैट कि मुझको ये करना चाहिए, डायग्राम में न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड आना चाहिए, यस आई एग्री। और कुछ, और कुछ, यस जो लास्ट नोड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ डायरेक्टली हेड इज इक्वल टू न्यू नोड मत करना, पहले जो लास्ट नोड है, जो भी आपका लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है दैट शुड पॉइंट टू द न्यू नोड, ए लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है दैट शुड पॉइंट टू द न्यू नोड, दैट इज अनदर थिंग दैट आई नीड टू टेक केयर। एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा थिंग दैट आई नीड टू टेक केयर apart from that? Definitely it is add first है, अगर add first है तो head should point to this, अगर add first है then head should point to this। तो just to summarize, मुझको तीन चीजें करनी है, पहली चीज तो मुझको नोड क्रिएट करना है, आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लास्ट नोड के नेक्स्ट में मुझको न्यू नोड ऐड करना है, अगर आपको लास्ट नोड के नेक्स्ट में अगर आपको न्यू नोड ऐड करना है तो कॉमन सेंस है फर्स्ट ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड, am I correct? First traverse till last node, so you need to start all the way from the first node, all the way from the first node, and you jump, you go to the last node, I reach to the last node. Then what you are saying next, on then third step I'm saying last node next, last node next is equal to new node, is it so? Yes, last node next is equal to new node, but not only last node next is equal to new node, also new node next is equal to head, a new node's next is equal to head, yes I need to take care of that as well. So I talked about this, you see the steps, the first step somewhere you are saying create a node, okay that is good. Step number 2, you traverse till the last node, I understand. Step number 3, somewhere new nodes next, a new nodes next is equal to head, oh that is also all right. Step number 4, the last nodes next, last nodes next is equal to new node, that also understood. And one more step that was left, one more step that was left is nothing but a head is equal to new node, a head is pointing to the new node, that was step number 5. Can you just compare with the code that you have written just now? अभी आपने जो आइडलास के लिए जो कोड लिखा है, क्या आप लोग कंपेयर कर सकते हो? स्टेप्स आपके सामने हैं, जो कोड आपने आइडलास के लिए लिखा है, क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हो? डू यू सी सम सिमिलरिटी देयर? अरे स्टेप्स मैंने लिखे हैं, कोड भी आपने लिखा है, और आइडलास का कोड अभी 1 मिनट पहले हमने लिखा था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोड। सी आई विल टेल यू, forget about special case, create new node and init it, a create new node and initialize it, step number 1, see it carefully. Next, traverse till last node, or traverse till last node, you are traversing till last node, that is your case number 2, that is good. Third thing, new node next is equal to head, or new nodes next is nothing but the head, oh we have already written that, plus extra last node next is equal to new node, or last node next is equal to new node, that also we have written. Oh, what all left, what all left is only one thing, is since we are adding a node at the start, since we are adding a node at the start, at the start matlab head pointer must point to that node, isn't it? I hope Pooja that is clear. हम लोग पांचवा स्टेप क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एड फर्स्ट है, एड फर्स्ट मतलब अगर नोड आप लोग एट द स्टार्ट ऐड करने वाले हो then definitely head should point to that particular new node, and that is what only one extra line that we need, the rest entire code is copy and paste. So writing add first is a matter of a minute, not even minute, few seconds. All I'm doing is that changing the name of a function from add last to add first, changing a name from add last to add first, you go ahead and then everything I'm saying that make head to new node, that's it. Just write one more line, head is equal to new node, and that's it. So add first is completed, add first is completed. So code of add last and add first is exactly same with one line extra, with one line extra. Don't worry, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। अगर हमें नोड एट द बिगिनिंग ऐड करना है, पहले आप लोग डायग्राम चेक करो,
अगर आपको नोड एट द बिगिनिंग ऐड करना है, आपको नोड यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है, तो आपको क्या क्या नया चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले तो नोड क्रिएट करना चाहिए, दैट एब्सोल्युटली फाइन. व्हाट इज सेकंड स्टेप? You need to go till the last node. So you need to traverse till the last node. So you traverse till last node. That is second thing. Okay, that is also done. First thing is done, second thing is done. Third thing, the new nodes next is equal to head. In new nodes next is equal to head, आप लोग कह रहे हो ये नोड इवन तो आप लोग एट द स्टार्ट ऐड कर रहे हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस होता है. सो दिस नोड will this node will point to the head. A new node's next is equal to head, and at the same time last node should point to the new first node. Last node should point to new first node. That is also done. And what is the final last thing? The final last thing, all you need to do that head is equal to new node. Head is equal to new node, so that from there onwards your linked list will begin with head. योर लिंक लिस्ट विल बिगिन विद द हेड. सो अभी आप लोग चेक करो आपकी लिंक लिस्ट सही जा रही है क्या? ये लिंक लिस्ट हम लोग चेक करते हैं. हमारी लिंक लिस्ट शुरू होगी 50 से, बाद में 10 पे जाएगी, बाद में 20 पे जाएगी, बाद में 30, देन 40, एंड देन ऑल द वे घूम के वापस से इसको पॉइंट करेगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स आई नीड टू डू, आई गेस. इज दिस क्लियर? दिस इज प्रीटी सिंपल, नथिंग ग्रेट इज देयर. तो सर काम करता है क्या? हाँ काम करता है क्या, दैट कुडंट बी अ क्वेश्चन. तो काम करता है क्या, करके देखते हैं. और अभी हम लोग एड फर्स्ट कर रहे हैं, एड फर्स्ट कर रहे हैं. सो टू एडिंग अ नोड एट द बिगिनिंग 10, एडिंग अ नोड एट द बिगिनिंग लेट्स से 20, एडिंग अ नोड एट द बिगिनिंग 30. ये पहले मैंने 10 ऐड किया, 10 के पहले मैंने 20 ऐड किया, 20 के पहले मैंने 30 ऐड किया. पहले मैंने 10 ऐड किया, 10 के पहले मैंने 20 ऐड किया, 20 के पहले मैंने 30 ऐड किया. तो फाइनली माय लिंक लिस्ट विल बी, यस जानवी दैट इज करेक्ट, इट विल बी 30 20 10. एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है. एंड ओ ओ कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? ओ सॉरी, आई फॉरगॉट, नीचे का कमेंट हम लोग नहीं निकाला शायद. हाँ ये कमेंटेड है ना, मैं भी डर गया ऐसे क्या हो गया. कोई बात नहीं, लेट्स गो अहेड रन इट वंस अगेन. 2 10 2 20 2 30 10 20 30 display. Oh yes, it is working well, that is working well. Say 0 and done. Why don't you try it? All right, so that is good. The majority of you had done that. Now let us move further and we talk about the next. What is the next part that we want to talk about is add at position. Add at position. And to make an add at position, go ahead. We have got a head pointer. Let's say it's 10, it's 20, it's 30, it's 40, 50. Let's say it is all the way there. And I want to add a new node at the position number 4. If you want to add a new node at the position number 4, डायग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? एक नया नोड क्रिएट होना चाहिए. डायग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? एक नया नोड क्रिएट होना चाहिए. और अगर आपको फोर्थ पोजीशन पे ऐड करना है तो थर्ड पोजीशन के नेक्स्ट में ही आना चाहिए और इसके नेक्स्ट में ओल्ड फोर्थ पोजीशन आना चाहिए. इज इट व्हाट शुड हैपन? ऑब्वियसली ये लिंक डिस्ट्रॉय होना चाहिए.
एडिंग अ नोड एट द फोर्थ पोजीशन, डायग्रामेटिकली क्या आउटकम यही आना चाहिए? यस, ये आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? नथिंग मच। तो क्वेश्चन इज, सर स्टेप्स क्या क्या करने पड़ेंगे? अगर आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट का कोड अवेलेबल है, आई रिपीट, अगर आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट का एडेड पोजीशन का कोड अवेलेबल है, हो सके तो उस कोड को एक बार ओपन कर लो। हो सके तो एक बार उस कोड को ओपन कर लो और एक बार उसको थोड़ा सा चेक कर लो कि सिंगली लिंक लिस्ट के कोड में ऐड एट पोजीशन के लिए हमने क्या क्या किया था। आई एम नॉट ट्राइंग कोड, आई एम सेइंग दैट जस्ट कमेंट्स भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा। सो व्हाट ऑल वी नीड टू, वी नीड टू एलोकेट द न्यू नोड, गुड। वी नीड टू ट्रैवर्स टिल पोजीशन -1, गुड। स्पेशल केसेस छोड़ देते हैं। New node के next should point to the trav's next. Okay, that is good. And then trav's next should point to the new node. Oh, this is what all logic that we need to do? Absolutely. चलो, let us see it and let us go and take a look at कि इस circular में हमें क्या क्या करना पड़ेगा. Let's see. Let's see क्या क्या करना पड़ेगा. I understand very well. अगर आपको नया नोड यहाँ पर ऐड करना है, my very first step will be go ahead and create a new node. Yes, I will create a new node. That will be my very first step. Good. What should be the second step? The second step would be I need to traverse till position -1. Oh, traverse till position -1, position -1, position -1. Yes. So I have got trav pointer and this traversing till position -1. Traverse till position -1. That would be my second step. Yes, I traverse till position -1. That is second step. What should be the third step? What should be the third step? द थर्ड स्टेप शुड बी आइडियली ये जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में ये जो ट्रैव था उसका नेक्स्ट आना चाहिए। ये न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट में 40 आना चाहिए। दैट इज करेक्ट गौरव, न्यू नोड के नेक्स्ट में 40 आना चाहिए। लेकिन 40 कहाँ पर है? अगर आप लोग ठीक से नोट करते हो, ये 40 मेरे ट्रैव के नेक्स्ट में, ये 40 कहाँ पर है? ट्रैव के नेक्स्ट में है। सो आई कैन सिंपली से दैट पॉइंटिंग दिस टू दिस, दैट शुड बी प्रोबेबली माय थर्ड स्टेप। Understood? And what is the fourth step? What should be the fourth step? The fourth step is like very easy. All I need to do is that trav के next में इसको point होना चाहिए। आपने नया वाला link बना लिया है तो old वाला link break होना चाहिए। trav के next में new node आना चाहिए। That is your fourth step. Now just tell me, is it any way different than what we have seen in a singly linked list? Is it any way different than the what we have seen in single English? Absolutely no. तो सर यहाँ पर क्या कोड करना है? टू बी फ्रैंक यहाँ पर कुछ भी कोड नहीं करना है। जो भी कोड किया है उसको कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो भी कोड किया है उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। एंड दैट इज द रीजन। अब आपको समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा था कि कल के लैब में उसका ठीक से प्रैक्टिकल करो, सारा पेपर वर्क करो। एज यू डू मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स, यू विल बी मोर एंड मोर कंफर्टेबल। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद वन लिंक लिस्ट, you can be always comfortable with not only with linked list but everything else. Now मेरा basic code is done. What about my special cases? Any special cases to be considered? Oh, special cases to be considered. If list is empty, uh, add the node at the start. I understand. If position is less than equal to 1, I want to add the node at the start. Okay, that is all right. In either case, I need to make a call to the add first function. In either case, I need to call the function add first function. So that is good. मुझको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. So even my first special cases is also fine. What about this special case? If you are trying to add a node which is beyond the position, if you are trying to add a node beyond the position, what will happen? Oh, travel.next is equal to null. What will happen? Now there is a problem because यहाँ पर null तो कभी होने ही वाला नहीं है। तो मुझको कैसे पता चलेगा कि you are going beyond the position? ये trav.next is equal to null, ये लास्ट प्रोग्राम में ये क्या चेक कर रहा था? ये लास्ट नोड चेक कर रहा था। तो अभी मैं लास्ट नोड कैसे चेक कर सकता हूँ? विद अवर अर्लियर एग्जाम्पल वी नो इट वेरी वेल, आई कैन सिंपली रिप्लेस इट विद द हेड। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो विच विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट माई पोजिशन इज गोइंग मच बियॉन्ड द लेंथ, एंड इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड द लेंथ, दैट्स इट। और कुछ करना है? और कुछ नहीं करना है। जस्ट गो अहेड, रन अ प्रोग्राम एंड देन कम अप विद द रिजल्ट। लेट्स सी, इज इट वर्किंग वेल? लेट्स सी। पिछला कॉपी पेस्ट किया तो कुछ उससे वो भी कॉपी किया, पैकेज भी कॉपी किया था।
Let us run it once again and let us check whether the insert at a given position is it working or not. Working or not. Let me first of all say 3, 10, 3, 20, 3, 30, 3, 40. And right now 10, 20, 30, 40, this is my linked list. Oh, I see that. I want to add 50 at position number 4. पहले general case पहले check करते हैं. I want to add 50 at position number 4. So 4 add 40 at position number 4. मतलब 30 के बाद में और 40 के पहले ये आना चाहिए. Oh yes, अच्छा मैंने 40 ऐड किया, कोई बात नहीं. सो 40 इज एडेड वंस अगेन. ए 40 इज एडेड वंस अगेन. मैंने 50 ऐड करना था, मैंने गलती से 40 ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अल्टीमेटली द 40 इज एडेड ओवर हेयर. सो लुक्स गुड, थिंग्स आर गोइंग वेल. बट व्हाट अबाउट अगर मैंने पहले नोड के ऊपर ऐड करने के लिए बोला तो यस आई वांट टू चेक दैट एज वेल. सो आई सिंपली से दैट एडेड पोजीशन, लेट्स से वंस अगेन, एंड लेट्स से आई एम ट्राइंग टू ऐड एलिमेंट 60. 60 at the position 0, at the position 0, at the position 0, and let me check, is it working? Yes, it is going well there. So what about if you put it at the end? अभी already मेरे पास कितने नोड है? मेरे पास 6 नोड है. If I give the position number 10, will it work? Obviously it will add it at the end. I want to check that as well. 4 new element is let's say 70 and the position number 10. ये 6 नोड में 10 पोजीशन तो वैसे भी नहीं हो सकता. I just want to check, is it adding it at the end? Yes, it is adding at the end. So everywhere I guess the things are going good. Things are going good. So I really don't think कि इसके अलग से आपको कुछ करने की जरूरत है. Isn't it? All we are doing is only this much. Ekansh, have a look at this, Ekansh. Your basic code is this much. Acha, line number 111. I thought something is going wrong. Okay, in a diagram I should explain it. No problem. I'll explain. Go ahead. That's why I say that I do recommend please ask specific question. It will help us to go in a better way. So I'm just going ahead and going with the diagram. You can keep probably code side by side for you so that you can understand better. ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर beyond the position वाला होगा तो ये कैसे handle होगा. Beyond the position वाला होगा तो ये कैसे handle होगा. Head. A head is pointing to let's say 10. This pointing to 20. This pointing to 30. All the way. This is pointing at the beginning. Okay, that is good. This is my trav pointer. This is my trav pointer. And what you want to do? You want to add some node. You want to add some node beyond the position. Obviously beyond the position मतलब अगर beyond the position आता है तो हमने decide किया है कि हमको node at the end add करना है. So I'm talking about a node. Which node to be added? Let's say that my new node is let's say 40, and this is nothing but the new node which is at the moment next is equal to null. So how exactly it is going? ये आपने counter already रखा हुआ है. अब let's say that I'm giving the position, I'm giving position is equal to 8. अब मेरी लिंक लिस्ट 3 नोड की है तो पोजीशन नंबर 8 तो हो ही नहीं सकता. इट इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन. आई अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. तो इनिशियली i is equal to 1 जहां से हमने लूप चालू किया है. टेक अ लुक एट दिस. i is equal to 1 जहां से हमने लूप चालू किया है. i is less than position minus 1. i is less than 7. yes, i is less than 7. हमको क्या करना है? i is less than 7. trav is equal to trav's next. A trav is equal to trav's next. We went ahead. Trav is equal to trav's next, and then we continued further. Again, you say I plus plus, it become 2. It become 2, and again, when it is 2, again you check that 2 is still less than 7. Yes, 2 is still less than 7. You go ahead. You again want to say trav is equal to trav's next. You again want to say trav is equal to trav's next. However, please note that you are already at the last node. अब इसके बाद में ऑलरेडी आप लोग थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए हो. ऑलरेडी आप लोग थर्ड पोजीशन पे के ऊपर पहुंच गए हो. आपने यूजर ने बोला है कि पोजीशन नंबर 8. ये पोजीशन नंबर 8 तो है ही नहीं. तो ऐसे केस में मुझको करना क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है. ये जो नोड है ये मुझको एट द एंड यहीं पर ऐड करना है. और अगर मुझको यहीं पर ऐड करना है तो मुझको मेरा लूप यहीं पर रोकना चाहिए. करेक्ट? सो यू गो बैक. यू अगेन से i plus plus, i plus plus, I becomes 3, I becomes 3, and now you check, oh, 3 is less than position minus 1. Yes, 3 is still position minus 1, not a problem. You are checking over here, trav dot next is equal to head. Or trav dot next, is it equal to head? Oh yes, it equal to head.
It only means that this node is a last node. If this node is the last node, there is no point in repeating this loop again and again. Repeat करके हम लोग क्या करने वाले हैं? Nothing much. So I just simply say break, come out of the loop, come out of the loop. When I come out of the loop, I found that the trav is pointing at the last node, and then what you're doing? New nodes next is equal to trav's next. A new nodes next is equal to trav's next. A trav's next is nothing but all the way, it is last node, so it is pointing to the head. This is done. Last thing, trav's next is equal to new node, or trav's next is equal to new node. So this trav, uska next, it is pointing to the new node. Now it is no more pointing to this. And this is how, when I have given position is equal to much beyond this, at that time it is not giving me the exception, or it is not adding at the wrong position, it is trying to add at the end. So it is doing kind of a idless operation. I hope, Ekansh, that is clear. What all I'm saying is that I was simply saying that हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या ये लास्ट नोड है, और अगर लास्ट नोड है तो लूप में आगे मत बढ़ो, यहाँ से बाहर आ जाओ, और वो लास्ट नोड के बाद में ये नया वाला नोड ऐड कर दो. लास्ट नोड के बाद में ये नया वाला नोड ऐड कर दो, इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सेप्शन. What was the other option available? Other option was available. You may say that this is the wrong position. You might throw the exception from here, saying that कि ये position गलत है, हम लोग आपके नोड को ऐड नहीं करते. आपकी लिंक लिस्ट है, चॉइस आपका है. Done. Add at position. Is it clear to everyone? Good. And if it is clear to everyone, let us go ahead with the complicated function. Complicated function. Bolo, ruko. Pooja is saying that, so sir, can instead of this, we can call idlers function. Pooja, conceptual answer is yes. Instead of doing this, can we make a call to the idlers function? Absolutely, you can call to the idlers function. But I personally do not prefer it. Why I personally do not prefer it? You just understand that. Already you have traversed the entire loop. Take a look at this. Already you have traversed the entire loop, and after that, if you made a call to the add last, after that, if you make a call to the add last, what will happen? What will happen? You go to the add last function, and again you will do the entire traversing once again. In my opinion, this is somewhere your performance is getting reduced, and that is the reason I didn't like that. I can again call it, but can we call it as far as output is concerned? Answer is yes, you can still call it. पूजा का क्वेश्चन ये था, मैंने कहा ना यार क्वेश्चन पब्लिक फोरम पे डालो रे, पब्लिकली डालो. हाँ, पूजा का क्वेश्चन ये था, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, क्या हम लोग यहाँ पर आइडलास्ट कॉल कर सकते हैं क्या? और मेरा आंसर है डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज कॉल आइडलास्ट ओवर हियर, एंड वी कैन ऐड द नोड एट द एंड यूजिंग दैट. लेकिन मेरा कहना ये था कि यहाँ पर ऑलरेडी आपने एक बार लूप लगाया है, यू ऑलरेडी ट्रेवर्स एट द एंड. Now if you make a call to the add last, now if you make a call to the add last, from here you will go into the add last, and inside add last, you are again writing a loop to again go to the last node. तो आपका ये लास्ट तक जाने वाला जो लूप है, ये लूप आपका 2 बार रिपीट हो रहा है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रनिंग टाइम बढ़ जाएगा. एंड दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग दैट अगर आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो, अगर आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो, then better you should do it over here itself. As far as efficiency is concerned, as far as output is concerned, you may call idlers, that should still work. Pooja, is that clear? वैसे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आज 31st का पार्टी काफी अच्छा किया. When today lecture started, by 9 o'clock, there were 270 students. So I started lecture with 270 students, and now I see 348. Look like few people are still not wake up from the party. जब वो उठ जाएंगे तो उनको बताना कि अपना भी पार्टी हो गया यहाँ पर करके, लिंक लिस्ट खत्म हो गया. एनीवे, हम लोग आगे जाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन. विच इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन? In my opinion, the next function we will say del first function. So del first में complication क्या है? करके देखते हैं.
कॉम्प्लिकेशन है भी या नहीं है, लेट्स सी. So you have got a node head pointer pointing to this 10, this pointing to 20, pointing to 30, pointing to 40, all the way. This is pointing to head once again. And now I want to delete the node. Can you please tell me diagrammatically, if you want to delete the node, if you want to delete the node 40, what should be done? 40 नहीं, 10 del first चल रहा है. ए del first में अगर आपको 10 को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको 10 को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, so one thing someone is saying that I should be going with head is equal to heads next. ये ऐसे करना पड़ेगा. But is it sufficient? Yes, absolutely correct. There is something extra also you need. Just saying head is equal to head arrow next is not sufficient. Just saying head is equal to head arrow next is not sufficient. You need to again go ahead. You need to go to the last node. You need to go to the last node, and your last node's next should point to this node. Is it so? Yes. So I need to take care of that as well. हाँ, जब मैं ऐसे करूंगा तब मैं कह सकता हूँ अच्छा ओके नाउ दिस इज गोइंग गुड. तो what all things that I need to do? What all things that I need to do? In a general case, in a general case, I need to first of all traverse till the last node. Okay, traverse till last node. अभी आपको समझ में आ गया last node तक कैसे traverse करना है. Okay, that is good. So I reach to the last node. What should be the second step? What's the second step? अब वो जो trav का जो next है पहले उसको manage कर लेते हैं. आई गेस या तो अब आपकी मर्जी है, या तो ट्रैव का नेक्स्ट पहले मैनेज कर लो या हेड को मैनेज कर लो. इट इज अप टू यू. लेट्स सेट टेक हेड टू नेक्स्ट नोड. नेक्स्ट नोड इन द सेंस आई एम सेइंग द सेकंड नोड. ए फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो यू आर गोइंग टू द सेकंड नोड. ओके, दैट इज डन. सो हेड इज कमिंग ओवर देयर. सो लाइक अ फर्स्ट स्टेप, second step. Now head is pointing to this. And then what should be the third step? Now whatever is your new head, okay, whatever is the new head, then I'm saying that travs next to this new head. It travs next to new head. That's probably third thing, so that this link is automatically broken. I guess nothing much we need to do it. फिर से एक बार, what all I'm saying, you go ahead. First thing you need to traverse, you need to, this is where head is, so travel यहाँ से शुरू करो and you first reach till the last node. So I reached till the last node, I got the last node आ गया. What is next job to be done? ये जो head अभी यहाँ पर point कर रहा था, let's say that let us make head pointing to the next node. A head is now pointing to the next node, that is okay. And then what is next job to be done? ये जो आपका नया हेड है, ये जो ट्रैव का जो नेक्स्ट है, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है, इट शुड पॉइंट टू द न्यू हेड. पॉइंट टू द न्यू हेड. इज दैट ऑल राइट? अगर आप लोग सर हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, अगर मैं पहले नहीं कर रहा हूं तो पहले नहीं कर रहे हो तो फिर चॉइस इज योर्स. तो पहले आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रैव नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट एंड देन यू कैन से हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट. तो ऑर्डर आपने कैसे किया है, फैज एंड गौरव, ऑर्डर आपने कैसे किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपने पहले हेड को मूव कर लिया है देन आई कैन सिंपली से ट्रैव नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू हेड. कुछ लोग अगर इस ऑर्डर को अगर आपको उल्टा करना है, सर इस ऑर्डर को मुझको उल्टा करना है, अगर आपको उल्टा करना है तो फिर सो आई हैव नॉट येट मॉडिफाइड द हेड, सो आई कैन से दैट ट्रैव्स नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट एंड देन यू कैन से दैट हेड इज इक्वल टू हेड्स नेक्स्ट. इट डिपेंड्स कि आप लोग कैसे सोच रहे हो और कैसे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, एंड बोथ आर करेक्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट अस गो अहेड एंड राइट अ कोड. कौन सा बड़ा तीर मारना है? Let us go back, write a code. By the way, this is general case. We need to still think of the special cases. What else first? So again, write it in English first. What is first thing? First thing is traverse till last node using trav. Okay, done. What is next step? Okay, take head to the next in the sense second node. Next node. Okay, that is also done. And then the last node is trav next should be
should be to the head, to the new head, I would say, new head, updated head. Let us put it in a code. How do you put in a code? Node trav is equal to head. That is good. How do you traverse to the last node? By the time we are comfortable, I guess, trav next is not equal to head. Trav is equal to trav dot next. एक कंफ्यूजन शायद कुछ लोगों का कल था, कुछ लोगों का मतलब एक दो लोगों का था। जब हम लोग व्हाइल लूप में एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं तो करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। तो जब मैं व्हाइल के बाद में करली ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूं, इस लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके नेक्स्ट, उसके बाद में व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट, आई वांट टू टेक अ हेड टू द सेकंड नोड, हेड डॉट नेक्स्ट, और दैट इज आल्सो डन। एंड देन वो जो लास्ट नोड था, वो जो लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में हेड आ गया। ओवर। बाय द वे, इज देयर एनी स्पेशल केसेस फॉर दिस? डू वी हैव एनी स्पेशल केसेस फॉर दिस? ये पहले फिर से एक बार बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll just repeat this part once again and then we'll look for the special cases. I'm going ahead, repeating this once again. So traverse till last node, you take some pointer. You take some pointer, let's say this is a pointer. So you started with trav is equal to head. A trav is equal to head और हमें लास्ट नोड पे जाना है। लास्ट नोड वो होता है जिसका नेक्स्ट, लास्ट नोड वो होता है जिसका नेक्स्ट, वापस से, ये लास्ट नोड वो होता है जिसका नेक्स्ट हेड है। सो इसका नेक्स्ट हेड नहीं है, गो अहेड। इसका नेक्स्ट हेड नहीं है, गो अहेड। इसका नेक्स्ट हेड नहीं है, गो अहेड। इसका नेक्स्ट हेड है। सो आई फाउंड दैट दिस इज नथिंग बट माय लास्ट नोड, दिस इज नथिंग बट द traverse. Okay, so I have traverse till the last node. The piece of code that is been written over here, the piece of code that has been written over here, it is something in front of you. Second thing, the take head to the next node. Take head to the next node. So I'm saying that the step number 2, take head to the next node, and again hardly one line of code जो आपको ऊपर दिख रहा है, head is equal to head dot next. That is the second step. And step number 3, ये जो आपका last node है, इसका जो next है, इसका जो next है, it should point to the new head. It should not point to the old one. It should not point to the old one. All I need to do is that trav's next is equal to this new head. So trav's next is this updated head. Nothing else is to be done, that is in front of you. So all we discussed was like kind of a del first operation. But in a general case, the special cases, yes, special cases. Now I'm going ahead. What if my linked list is empty? If my linked list is empty, is there any point in traversing till last node? If list is empty, is there any point in traversing? No. To be frank, in this case, nothing to be done. I guess that if list is empty, क्या करना चाहिए? Last time क्या किया था? I guess we can simply throw the exception saying that linked list is empty. Okay, that is done. But is it the only special case that you have? Is it the only special case that you have got? हाँ, yes, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, and we need to think of it. What if my linked list is having only one node? What if the linked list is having only one node? अब क्या करना चाहिए? So if list has single node, what to do? What to do? Just nothing else. We have to simply make head is equal to null. If we have to simply make head is equal to null, so that this node is as good as deleted. So आपको ये delete करना है और इसको null करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वैसे भी नोड तो ऑलरेडी garbage collect हो ही जाएगा, आपको उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. So that is what all you understand. And if that is what all you understand, I'm just going ahead. Let me write the special cases. So special case number 1. What is special case 1? If list is empty, throw exception. If you have decided to throw the exception, not very difficult job. Go ahead. If is empty, throw new runtime exception. Runtime exception. वैसे अच्छी चीज ये है कि डेटा स्ट्रक्चर आपके बैच में यूजिंग जावा है. So as you are like a data structure using Java, it gives you time. It gives you time to spend more time onto the Java, and more coding that you do with the Java. I'm very sure you'll be a bit more confident as well. List
is empty. Chalo, this is done. Okay, but what is special case number two? Special case number two. If list has single node, yeah, how do I check? Then make head null. But how do I check whether the list has got a single node? How do I check whether the list has got a single node? Yes, heads next is pointing to the head itself. You take a look at the diagram. Head is 100 and heads next is also pointing to the 100. So when heads next is pointing to the head, it is there. All I need to do is that just make head is equal to null. Head is equal to null. Else, which was your general case, and what that general case is talking about? That general case is talking about that general case, delete first node, or delete first node, it is in front of you. Is this all right? Will it work? Please go ahead, try it at your end, check whether it is working. Don't worry, it is going to work. It's not a problem. You can just quickly go ahead. I can try to run it once. So 3 at last 10, 3 at last 20, 3 at last 30. So my current linked list is 10, 20, 30. I want to delete the first node. Delete the first node. Yes, 10 is deleted. Yes, 10 is deleted. Delete 20. Let me just check. Yes, 20 is deleted. Again, you continue further, delete first, and you find that even the last 30 is left, even that is deleted, list is empty. You try to delete it once more. Oh, list is empty, exception is thrown. So everything looks well to me. आप लोग check करके देखो whether it is working at your end as well. And we will take a break now. So Delphos हम लोगों ने कर लिया है. Dellas के बारे में आप लोग सोचो कि how you can do that. Well, after the break, we'll talk about the delete at the position, and we will also talk about delete all. Correct? If you have any question, meanwhile, post it. Welcome back. You're there. Okay. Let's get started once again. And what we were talking about was a function like del first. I hope you people have understood it. And now we'll go ahead and talk about next function, delete at the position. Let us just go back. Let us do the paperwork first. And after that, we will think whether what all changes that we need or whatever. So function is, let's say, delete at position. Delete at position. So this is a linked list. Head is pointing to 10, 10 is pointing to 20, 20 is pointing to 30, 30 is pointing to 40, 40 is pointing to 50. बस बहुत हो गया. And we will follow something similar technique for deleting at the position. Which technique to be followed? The something that we have seen earlier. Let's say that we will have a pointer, let's say temp, a trav pointer, and one pointer running behind it. One pointer running behind it is, let's say, trav pointer. Sorry, one trav pointer और पीछे चलने वाला pointer, let's say temp pointer. So what all I need to do? I need to traverse up to the given position. So if at all I want to delete this node, if I want to delete this node, practically क्या होना चाहिए? उसके पीछे का जो node है, उसके next में आगे के node का address आना चाहिए. This is what all I need to do. This is what all I need to do. So what steps that probably I will follow? It is very easy. You continue further. You want to go to the position, but before you go to the position, you say that temp is equal to trav, trav is equal to trav's next, temp is equal to trav, trav is equal to trav's next, temp is equal to trav, trav is equal to trav's next. This ensures that when trav reach
to the node at the position, temp is already pointing to a node before that. Temp is already pointing to a node before that. And if it is so what is next to be done? Next, nothing much to be done. Now this is trav, this is temp. So can you please tell me, अब मुझको यहाँ पर क्या करना चाहिए? This is trav, this is temp. तो मुझको यहाँ पर करना क्या चाहिए? Nothing special. All I need to do is that temps next is equal to trav's next. Temps next is equal to trav's next, and automatically the trav pointer, this is a trav node, will be automatically garbage collected later by the JVM. I need not to bother about it. So what all your steps are? Steps are pretty simple. Traverse till the position with a pointer behind, one thing. And second thing, simply say temps next is equal to trav's next. Okay, that is good. So let's go ahead. So code फिर से लिखना है. Now I'm not really planning to write the code once again. I can always go back. The code, similar code we had already written. The delete at the position in a singly linked list. Singly linked list में हमने जो code लिखा था, singly linked list में code लिखा था, the same logic we had written. Temp is equal to null and trav is equal to head all the way, and we are just checking over here I is equal to 1, I is less than position, I plus plus, and etc. Trav is equal to null, वो छोड़ दो. Temp is equal to trav and trav is equal to trav's next. Temp is equal to trav and trav is equal to trav's next. This way we are trying to traverse till the node and temp is running behind. And then simply temp's next is equal to trav's next. So your general case logic will still remain same. So what about special case logics? The special case logic, अगर आपको पहले position का node delete करना है, you can make a call to the del first directly. Yes, I understand that. If at all the position is wrong position, or if the head is null, you might want to throw the exception. Okay, that is also fine. You might throw the exception. It is up to you. And if at all you are trying to go beyond the position, if at all you are trying to go beyond the position, at that time also you want to throw the exception. But then how do I get to know that you are trying to go beyond the position? Oh, I can just check it over here. If trav.next is equal to head, if trav.next is equal to head, so I understand that we are trying to go beyond the position. So अगर मेरे पास 3 node है and you are saying that delete the fourth node, you should be saying that oh you are going out, तो यहाँ पे delete करने का कोई chance ही नहीं है. You can simply throw the exception like invalid position. That is what all efforts that we need to take. So delete at a position, delete at a position is quite similar to what we have seen earlier. सर ये काम करता है क्या? काम करता है क्या? वो काम करा के देखना पड़ेगा. Let's see. I'm going ahead. I'm trying to there's a error. हाँ कॉपी पेस्ट किया ना, कॉपी पेस्ट की वजह से उसका पैकेज भी इंपोर्ट हो जाता है. कोई बात नहीं. I'll try to run it once again. Okay, let me add the node 3 at last. 10, 3, 20, 3, 30, 3, 40, 3, 50. So right now the linked list is 10, 20, 30, 40, 50. I want to delete the node at the fourth position. So 7, and I want to delete the node at the fourth position, means 40 is to be deleted. Can you check? Oh yes, 40 is gone. I want to check. Let's say I want to delete the node at the first position. Is it working well? Let me try that as well. 7, delete the node at the first position, matlab 10 has gone. Oh yes, 10 is also deleted. That is also not a problem. Let us continue further. The another one. Let's say that I want to delete the last node. I want to delete a node at the third position. Is it working well with this? So 7, delete at a position at third node. It is giving me the error saying that it is invalid position. So look like there is something wrong with this. कोई बात नहीं, एक और try करते हैं. If it is beyond the position, if it is beyond the position, वो भी try करके देखते हैं. Let's say already I got 3 nodes and you are saying that position number 10. Yes, obviously position number 10, it is working very well, saying that it is in invalid position. तो look like सिर्फ ये जो last node है, वो जो हमारा जो loop चल रहा है, जो हमारा loop चल रहा है, जहां पर हम लोग invalid position counting कर रहे हैं, I guess we are doing something wrong with that. So that is the only thing we need to rectify. Otherwise rest everything looks good.
आई गेस मैंने इसको चेंज किया था क्या जगह, आई बिलीव सो, लेट्स सी। फिर से एक बार करेंगे। 10, 20, 30, that's it. Display and delete at the position 7, delete at the position number 3. Yes, it is deleted. A third node, the last node it is deleted, 30 is deleted. Oh, I guess मैंने कुछ तो करते वक्त उसको कट पेस्ट किया था, उसका लोकेशन चेंज किया था. Now I guess everything is all right. So I just simply say that, sir, this code and earlier code, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ यहाँ पर travis equal to null, that was one check was there, और वो check मैंने सिर्फ यहाँ पर चेंज किया है क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है. Apart from that, there is no change. Rest entire code is working well as it is. I hope that is all right. Why don't you try it? And meanwhile, there was a question by Ajinkya, and Ajinkya, I guess you today joined late. So if you join late, whatever question that you ask, that was the first question for today's session asked by the Naneshwar. And the question was very simple कि हम लोग ये टेम्पो ट्रैव क्यों ले रहे हैं? हम लोग सीधा ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रैव डॉट नेक्स्ट, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, हम लोग कर सकते हैं. लेकिन मैंने कहा ना, मैं जब भी कोड पढ़ाता हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम. सो बहुत सारे लोगों को ट्रैव डॉट नेक्स्ट करने में भी उनको परेशानी होती है. तो आप उनको ये पढ़ाओगे ट्रैव डॉट नेक्स्ट, सो बेचारे वैसे ही उनकी जान चली जाती है. तो मुझको किसी की जान लेने का बिल्कुल शौक नहीं है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट सिंपल and trying to keep it more readable. But whatever, if you are doing it like a trav.next is equal to trav.next, that is still fine. That can still work. I hope Ajinkya I had answered your question. Yeah. Chalo, go ahead. I'm thinking that you people are copy pasting, you are running it, checking whether it is working. And this is something, as I said, it is same as the last code. सिर्फ जो बियॉन्ड पोजीशन वाला जो कंडीशन जो था, वो कंडीशन सिर्फ हमको मॉडिफाई करना पड़ा. वहां पर हेड इज इक्वल टू नल, सॉरी ट्रैव इज इक्वल टू नल, दैट वाज अ कंडीशन टू बी कंसीडर्ड. क्योंकि वहां पर नल पॉइंटर है, यहाँ पर नल पॉइंटर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली माय कंडीशन हैज टू बी डिफरेंट. दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैड टेकन केयर. Now we have done del first, we have done delete at position, and the next one I leave it as a homework for you. Public void del last. Del last, I said this is your lab assignment. Go ahead and do it. Not a problem. By the way, still one function is left, and this function is bit interesting in my opinion. My opinion. Go ahead. There's one function left. Public void delete all. Public void delete all. And how do you delete all the nodes? How do you delete all the nodes? Okay. Just by saying head is equal to null, is it sufficient? Do you believe that head is equal to null is sufficient? To be frank, accede carefully. There is a bit trouble. वैसे आजकल के जो क्या कहते हैं, आजकल के जो लेटेस्ट जेवीएम्स हैं, जो न्यूयर जेवीएम्स हैं, दो जेवीएम्स आर स्मार्ट इनफ एंड इंटेलिजेंट इनफ. बट जो ओल्डर जेवीएम थे, हैव अ लुक एट दिस. Have a look at this. This is very interesting. Head is equal to 10. This is pointing to 20. 20 is pointing to 30. 30 is pointing to 50, 40, 50, whatever it is. And then this is pointing back to this. If you just make head is equal to null, if you just make head is equal to null, head is not pointing to anything. Hey, please pay attention. Head is not pointing to anything. But do you believe that your nodes are unreferenced now? अगर आपने हेड को नल कर दिया, अगर आपने हेड को नल कर दिया, तो do you believe that these nodes are unreferenced? You still find that the first node is pointing to the second, second is pointing to the third, third is pointing to the fourth, and fourth is pointing still to the first. Oh, sir, this is still referring to each other. Trust me, अगर आप लोग जावा 8 या जावा इवन फॉरगेट जावा 8, जावा 4 एंड ऑनवर्ड्स अगर आप लोग कर रहे हो, तो गार्बेज कलेक्टर्स आर स्मार्ट इनफ. गार्बेज कलेक्टर्स आर स्मार्ट इनफ, दे अंडरस्टैंड दैट ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसमें से किसी को भी पॉइंट करने वाला कोई नहीं है. सो दिस कोड विल स्टिल वर्क. आई रिपीट वंस अगेन, इवन आजकल के जेवीएम में
आपका गार्बेज कलेक्टर इतना स्मार्ट है कि वो देखता है कि इवन दो these all objects are referencing to each other in a loop, still उनको रेफर करने वाला कोई नहीं है, और सिंस उसको रेफर करने वाला कोई नहीं है, just by writing this much of code, will it work? Trust me, it will work, but that is due to the optimization of garbage collector. But what if आगे जाके लेट्स से दैट कभी आपको ऐसा लॉजिक सी प्लस प्लस के लिए करना पड़ा, या फिर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव सी के लिए करना पड़ा, मुझको ऐसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना पड़ा जहाँ पर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है, तो सर ऐसे वक्त में मैं क्या कर सकता हूँ? ओह, दैट विल बी अ टफ जॉब। तो ऐसे वक्त में कुछ ट्रिक्स जो शायद आपको पता होने चाहिए, ट्रिक्स जो पता होनी चाहिए, डोंट कीप अ लिंक लिस्ट एज अ सर्कुलर, don't keep a linked list as a circular. I would say that let us do this in two steps. Let us do this in two steps. Step number one, let us make head is equal to null. Head arrow next is equal to null. First, make head arrow next is equal to null. Moment you make head arrow next is equal to null, don't you think that ये जो linked list बन रही है, now it is not a circular linked list. The whole linked list, अगर आप लोग यहाँ से यहाँ पर देखते हो, now this is a linear linked list. Is it so? Starting with 20, 20, 30, 50, 10. ये 20, 30, 50, 10 and then null. तो ये लिंक लिस्ट आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, अभी linear लिंक लिस्ट हो गई. That is the first step. And step number two, I would prefer is that I don't want to make this, I want to make this is equal to null. That is step number two. So now not a single node from this particular linked list is getting referred, and I believe this is quite better way ताकि गार्बेज कलेक्टर को अपनी अकल ज्यादा लगाने नहीं पड़े, ताकि गार्बेज कलेक्टर को अपनी अकल ज्यादा लगाना ना पड़े. दिस इज मोर सेफर वे irrespective of your garbage collection implementation, and this will ensure that your objects will be deleted. Yeah, have you got the point? Ultimately वैसे भी आपको सारे डिलीट ही करने थे. So I'm saying that I'm trying to convert step number one, convert circular list into singly linear list. And how I can do that? It is like hardly one line of code that I can write it by making head.next is equal to null. But still, in this particular case, so आपका linked list क्या कैसे होगा? Your linked list will become 20, 30, 50 and 10. 20, 30, 50 and 10, and head is still pointing to the last node. And the second thing, I can say that now delete, or rather, what is that? Make head null. You can simply say head is equal to null, so that head is equal to null, so that all those objects will be garbage collected. All those objects will be garbage collected. That's it. Hardly two lines of code. This is safer one to go, irrespective of implementation of garbage collection. This is what all I'm saying. That's it. वैसे आपको कोई बहुत बड़ा कोड लिखना है ऐसी बात नहीं है. This is still easy, but I'm just trying to tell you that कि अर्लियर इसमें थोड़ा सा गार्बेज कलेक्टर आपका कितना स्मार्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था. अब मैं उसकी डिपेंडेंसी निकाल रहा हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग दिस कोड bit more what is that agnostic to the garbage collector. So will it delete all the nodes? Yes, it will delete all the nodes. So can we check that? Yes, we can check that. I hope you people have understood this. Let me add the node 10. Let me add the node 20. Let me add the node 30. Three nodes are added. 10, 20, 30 is there. That is good. 8. Delete all. And you say display. Oh, linked list is empty. Good. Array, is this clear? Try it. Check if it is working. I believe all major operations of singly circular linked list are completed. You have any questions regarding singly circular linked list? You are welcome. So the point to note over here, the point to note over here
In this singly circular linked list, what we are doing in a singly circular linked list, we are in a singly circular linked list, what we are doing in a singly circular linked list, we are doing it quite similar to the linear linked list. Literally आपका added position and deleted position वो कोड तो हम लोगों ने as it is copy paste किया है and then they are working directly. लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पूरे लिंक लिस्ट में कहीं पर भी नल नहीं है। तो हम लोग जो अर्लियर जहां जहां पर कंडीशन लगा देते हैं while trav is not equal to null, now those kind of conditions we need to skip, those kind of conditions we need to skip. इतना सिर्फ हमें याद रखना है, अदरवाइज द एक्सरसाइज रिमेन सेम। तो जैसे पेपर वर्क आपने कल किया था वैसे ही पेपर आपको यहाँ पर करना है। हम लोग इन माय ओपिनियन यहाँ पर कुछ भी नया पढ़ने लायक नहीं है, तो सर इसका अलग से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? आई बिलीव करना चाहिए, सो दैट नॉट टू लर्न सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेकिन जितना ज्यादा पेपर वर्क आप लोग लिंक लिस्ट के ऊपर करते रहोगे, लिंक लिस्ट किसी भी टाइप का हो, सो हर एक टाइप का लिंक लिस्ट का पेपर वर्क कर लो, सो दैट मोर एंड मोर पॉइंटर्स दैट यू